हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इंटीग्रेशन फ्रॉम स्क्रेच के सीरीज में आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था दैट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक। मीन्स दैट इफ यू टेक पीरियोडिक फंक्शन उसका इंटीग्रेशन पीरियोडिक फंक्शन आए ये जरूरी नहीं है। वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स इन लास्ट क्लास. Okay, the first example which I took was integration of cosine of x. Yes, integration of cosine of x. Okay, let me bring that one. Integration of cosine of x, it was sine of x. Yes, integration of cosine of x, it was sine of x. So integration of cosine of x it was sine of x. So cosine function क्या होता है? Periodic function, and its integration is sine of x, that is also periodic function. But when we take integration of cosine of x, ये example जो है आपका यहाँ लिखा हुआ, ये example integration of cosine of x plus 1 dx, we get sine of x plus x. Sine of x is your periodic function, but dx is not a periodic function. Yes, so the overall answer is non-periodic. Okay, it's not periodic function. So we got what, that when you integrate a periodic function, your answer may be periodic or may not be periodic. Okay, so ये जरूरी नहीं है कि when you integrate a periodic function it is periodic. Okay, it may be periodic or it may not be periodic. और अब आज हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन सीरीज में. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इस आज क्लास में, वो ले रहा हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, लेट मी टेक इट्स आई इक्वल 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x dx, and let me give you a condition that x belongs to 0 to pi. Okay, ये कंडीशन किस काम का है हम फर्दर अभी आगे देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो लेट मी इंटीग्रेट इट आउट. इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि कोसाइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास आपको अच्छे से याद होने चाहिए. 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x, दिस इज नथिंग बट 2 ऑफ साइन स्क्वायर x dx, and 1 plus cosine of 2x, it is 2 cos square x cos square x. Okay, so in this expression it is 1 minus cos 2x, so it will be 2 sine square x dx. Okay, this 2 will come just outside, it will be square root of 2 integration square root of sine square x dx. Now the thing is, क्या हम इस स्क्वायर को डायरेक्ट काट के और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली? कैन वी राइट डायरेक्टली साइन ऑफ एक्स? इज इट ट्रू? नहीं. Why? You see, you might have learned this one, that 4 square, this gives you 4, 9 square gives you 9. Yeah, what do you do? You just cancel this out. Yes, but in function, when it is written x square, you cannot write directly x. This is wrong. You have to write something else. Why this is wrong? You see, अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर directly, if I add x, what will happen if someone takes x equal to -5? Okay, then according to this equation which I'm claiming, wait a minute, screen, yeah. Which I'm claiming that x equal to -5, then if you put on left hand side, you put what, -5 squared, and according to this the answer is x. That means answer should be -5. Yes or no? According to this should be answer -5. But you should know that what is the meaning of square root? What is the meaning of square root? Give me a number whose square gives you -5. Yes, it is the meaning of this one. No? The meaning of square root of -5 squared means that give me a number, give me a real number whose square gives you 5 squared. No, so if you're saying it's -5, that is wrong, because -5 squared, it is 25. Yes or no?
एंड यू आर सेइंग इट्स -5, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। -5 नहीं आ सकता बिकॉज there is no negative number in this world whose square gives you negative value. When you square this negative value, you will get positive value. Yes or no? Negative value मिल नहीं पाएगा आपका। So directly writing that -5 directly x, that is wrong. You have to write what? You have to write modulus of x. हमें पता नहीं है कि sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। if I write directly sin x और suppose sin x की जगह पे आप x की जगह पे आपने कोई एंगल ले लिया 3 pi/2 270, the value of 270 sin 270 is what? Sin 270 is -1, sin 3/3 pi/2 is -1। अगर इसको मैं इसमें रखता हूँ, इसमें रखूँ मैं अगर, तो वो देगा मुझे क्या, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 देगा। और अगर मैं डायरेक्ट sin x लिखता तो क्या आता, -1। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। यस और नो? तो हमें मॉडुलस ऑफ x sin x लिखना पड़ेगा। नाउ क्या करें इसका मॉडुलस ऑफ sin x का? हमें पता है our x belongs to what? Our x belongs to 0 to pi. My x belongs to 0 to pi. Since the x belongs to 0 to pi, you know that 0 to pi is what? It's from the first quadrant and the second quadrant. And in first quadrant and second quadrant, sin x is positive. तो ये overall positive है हमेशा in the range of, in the domain of x belongs to 0 to pi. So we can directly write this one because we know that, now we know that sin x is sin of x is positive because the given condition is x belongs to 0 to pi. Now you just need to integrate it out. So the integration of this one will be √2, and integration of sin x is minus cosine of x. Okay, plus c. This is the answer. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आंसर आपका -2 square root of 2 plus cosine of x. Okay, this is the solution. Similar question I'm giving you, which you can try. It is 1 plus cos 2x dx. Okay, here the condition is x belongs to -pi/2 pi/2. ओके, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन हमें लगता है कि इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इन एग्जाम्स लाइक IITJEE, एग्जाम्स लाइक IITJAM, एग्जाम्स लाइक CSR नेट, ये कंडीशंस बहुत मायने रखता है। कंडीशंस का बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज when you will solve this out, you will find that in square root you will find it will become 2 cosine of square x, and √2 will come outside, but this square will be cannot be cancelled. No, if you want to cancel that, you have to write modulus of cosine of x. So now you have to check this whether this cosine of x is positive or negative, and where it is positive and where it is negative. So according to given condition on x belongs to -pi/2 to pi/2. That is the first quadrant and the fourth quadrant. In fourth quadrant and in first quadrant, cosine of x is positive. Cosine of x is positive in fourth quadrant as well. Positive. तो ये दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आल्सो एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट आल्सो. So this cosine of x is positive or everywhere in the given domain. So we will just write square root of 2 cosine of x. लेकिन मान लीजिए अगर आपका फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको ऐसे दूं कि x belongs to pi/2 pi, तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा. Then in this case, okay, in this case, what will happen? This √2 cosine of x will be equal to what? √2 will be √2. But this time what happens? This time the x belongs to pi/2 to pi. That means the angle is in the second quadrant. And in second quadrant, we know that cosine of x function is negative. तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है. But if I directly write cosine of x, अगर मैं सीधा लिखूं cosine of x, that will be wrong because you are bringing cosine of x from square root. When you bring something outside from square root, that shouldn't be negative, it should be positive. इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ लगाना होगा, क्योंकि cosine of x will be negative because of the condition of x, and you are giving one minus sign to it.
so it will become what, minus into minus plus. Now this expression is the correct expression for this domain. तो क्वेश्चन क्वेश्चन करना, सॉल्व करना ठीक है, पर हमें डोमेन और जो दिया जाता है कंडीशंस पे बहुत ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गॉट दिस। अगला क्वेश्चन आप ले सकते हो, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। लेट मी टेक साइन 2x फॉर अ टाइम। ओके, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन मैं लगा देता हूँ आपको। cosine of x plus sine of x, the summation of these two function is positive or greater than equal to 0। okay, this is greater than equal to 0। okay, ये क्यों लगाया गया है देख लीजिए आप इसको पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह सॉल्व करें इस क्वेश्चन। दिस टाइम देयर इज नो cosine 2x फॉर्मूला, जो कि हम उसको सिंप्लीफाई कर दे 1 प्लस साइन 2x। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर, देयर इज नो फॉर्मूला डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ नहीं है कि डायरेक्ट मैं इसको लिख दूं 2 साइन स्क्वायर एक्स या टू कोसाइन स्क्वायर एक्स, समथिंग लाइक दैट। नो, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है आपके पास, फिर कैसे किया जाए। एक चीज तो है, एक चीज क्या है, आप वन को एज इट इज लिखो फॉर अ टाइम बीइंग। साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 साइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ x dx। okay, this is the formula for sine 2 of x। okay, this is the formula for sine 2 of x। बट इसका फायदा क्या हुआ जब मैंने इस फॉर्मूला को लगाया, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा कुछ, तो यस, एक फायदा आपको दिख सकता है। सी एज देयर इज वन टीचर फ्रॉम whom आई स्टडीड। ओके, से मैंने पढ़ा था आईआईटी जेईई का मैथ्स। हिज नेम इज मनोज चौहान, एमसी सर, currently is teaching at an academy। उनका ये कहना था, वो ये कहते थे कि महान वो नहीं होता जो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की जगह 1 लिखे। ओके, महान वो नहीं है, महान वो है जो वो जान जाए कि 1 की जगह कब कब आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखना होता है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में वही करना है जो सर ने कहा था हमारे। ओके, this will be integration square root of, in place of 1 you write cos square x plus sin square x, because cos square x plus sin square x 1, plus this expression 2 sin x into cosine of x d of x। now this is what, a square b square 2ab will become square root of cosine of x plus sine of x ब्रैकेट होल स्क्वायर dx। फिर से वो आ गया, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फिर से आ गया। ये इसको काटने से आपको क्या लिखना होगा, मॉडुलस ऑफ, यू हैव टू राइट इंटीग्रेशन मॉड कोसाइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। but it is given that, we have given that the cosine of x, साइन ऑफ x का समेशन जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ओके, दिस इज गिवन टू यू, so this is positive or greater than 0। okay, this is positive, so we can just open this as it is, no need to change the sign anything। now please integrate this out। integration of will be integration of cosine of x dx, integration of, so this will be sine of x minus cosine of x plus approximation। आई होप आपको ये क्वेश्चन में कुछ अच्छा, कुछ जानकर समझ में आया होगा। like when to write 1 as cos square x plus sin square x and when to write different formulas। no? तो जरूरी है कि ये समझ में आया आपको कि ये 1 की जगह कब क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कंडीशन बहुत मायने रखता है, ये कंडीशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत मायने रखता है कंडीशन का। in exams like JEE, okay, और JAM, these exams, या और भी एग्जाम जैसे गेट एग्जाम हो गया आपका, गेट एग्जाम में भी मायने रखता है ये सब। गेट एग्जाम हो गया, फॉर द वन हु इज
इन बीटेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट फॉर यू, दैट इज होमवर्क फॉर यू। सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा साइन चेंज है इसमें। साइन 2x dx. Okay, please try this question and let me give the condition. It is cos square x minus sin cos x minus sin x greater than equal to 0. This is a condition. Please try this question. Okay, अब हम बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेशन tan square x dx. How to integrate? There is no formula for tan square x, because we have learned that there one formula, that integration of secant square x, this is 10x plus c। ये हमने पढ़ा है, पर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें 10 स्क्वायर एक्स आई डी एक्स। यस, तो क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, पर हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो हमारा दिमाग इसको देखकर इस फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए कि कुछ हो सकता है, कुछ मैनिपुलेशन करे, उस जैसा बन जाए। यस, वी कैन डू यस, बिकॉज देयर इज एन आइडेंटिटी इन क्लास 10 you have learned, in there is an identity relating to secant square x and tangent square x. We know that tangent square x is nothing but it is secant square x minus 1, basic identity of class 10. Now just split this out, secant square x dx minus integration 1 dx. The integration of secant square is tangent of x and integration of 1 will be x plus c constant of integration. Easy है, बहुत easy था क्वेश्चन, बट देखने में मतलब हमें लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, मतलब अप्रोच क्या होगा। वी डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर x, बट अगर अप्रोच अच्छे से करें, आपको नहीं पता, ये चीज नहीं पता है, जो ही आपको पता है उस पर आप फोकस करें। ओके, इंटीग्रेशन जो है प्रैक्टिस से आएगा। ओके, प्रैक्टिस से ही आएगा इंटीग्रेशन। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऐसे ऐसा चैप्टर है कि जितना भी प्रैक्टिस कीजिए आप, जब जेई का क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन का देखोगे आप, तो एक नयापन लगता है क्वेश्चन में। यू विल फील दैट क्वेश्चन इज न्यू, समथिंग फ्रेशनेस इज देयर इन द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हो आपके लिए, that is cot square x dx. Again, you know that there is no formula for cot square x, but you know one formula, that integration of cosecant square x dx, this is minus cot x plus c. इसको आप इससे रिलेट कर लो और आंसर का सॉल्व हो जाए। ओके, होमवर्क फॉर यू। ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स dx। किस तरह से सॉल्व होगा ये? इज देयर एनी फॉर्मूला? दिस टाइम तो हमें तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है 1 प्लस cos x में। One thing you can do, what you can rationalize something. Okay, you can rationalize this thing. How? Multiply numerator by, okay, ultimate 1 cos, multiply numerator and denominator by 1 minus cos x, the conjugate of this. Okay, okay, dx क्या बनेगा? ये ऊपर बन जाएगा 1 minus cosine of x and denominator will become, this is 1 a plus b a minus b। ये मल्टीप्लिकेशन में आपका a plus b a minus b, मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा? ये a square minus b square, a square is 1 minus b square, that is cos square x and dx। okay, now you see what this will become. This will become what? Upside will be 1 minus cosine of x divided by 1 minus cos square x is what? Sin square x dx. Now split this sin square x, will be 1 upon sin square x dx minus integration cosine of x upon sin square x dx. What is 1 upon sin square x? That is cosecant square x dx minus, if you check this out, this is cosine of x upon sin of x into 1 more sin of x dx। इसका तो आपको पता है, ये इट इज cotangent of x, yes, minus cosine x upon sin x is what? Cotangent x into, and this is 1 upon sin x, that is
cosecant x dx. Okay, so the solution to this is cotangent x minus integration of cot x into cosecant x is what? Cosecant x is what? Minus cosecant x plus c. The equation become minus cosecant x minus minus plus, and this is the solution to your answer. क्वेश्चन इजी था, पर आप ये समझ में आना चाहिए था कि when it is given that 1/1 plus cos x हमें करना क्या है. दिस क्वेश्चन कुड बी डन बाय अदर मेथड्स आल्सो. ओके, बहुत मेथड्स कोशिश करने का, पर अभी नहीं. अभी फिलहाल आप ये मेथड आपके लिए इजी था क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़े हुए हो. हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेंगे तब हम एक और मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेम क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो. दैट इज 1/1 minus sin of x dx. ओके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं एज ए होमवर्क. जो क्वेश्चन आपने ऊपर किया है उसी तरह, जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया है उसी तरह ये क्वेश्चन भी कर लेंगे आराम से इसीलिए. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज में. एक और हम अच्छे क्वेश्चन को करते हैं. इंटीग्रेशन 2 + 3 cosine of x divide by dx, and it is denominator is sin square x dx. इस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को हम. It will be, we will split this sin square x to both the terms. So it will be 2 sin square x plus 3 cosine of x upon sin square x dx. Yes, ये हो जाएगा आपका. Now this will become what? 2 will be cosecant square x dx plus 3 cos upon sin. अभी हमने ऊपर जैसे देखा था cos upon one cos and one sin will become cot x, and one upon sin will be cosecant x dx. ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा स्प्लिट. ओके, दिस इज एक्सप्रेशन. नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं. तो ये बन जाएगा हमारा 2 will be outside. इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर इज minus cot x. Okay, plus this 3 will come outside, and integration of cot x into cosecant x is minus cosecant x plus c. So we got the answer minus 2 cotangent x minus 3 cosecant x plus c. ये आपका आंसर. इसी तरह और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. इंटीग्रेशन cosine of 2x divide by sin square x into cosine square x dx. ओके, इस तरह करना है क्वेश्चन को. इजी है, बस आपको कोसिकेंट cos 2x का वो फॉर्मूला लगाना जिसमें साइन भी हो कोसाइन भी हो, बिकॉज हमें बस ये हिंट मिल रहा है कि डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर एक्स है कोसाइन स्क्वायर एक्स है. तो हमें पता है cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय जो भी दिया गया आपका, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसाइन स्क्वायर एक्स एंड dx. नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं. व्हेन यू डिवाइड the both term, if you divide this one by this sin square upon cos square, the cos square will be cancelled and you will get only the sin square x dx, minus when you will divide this sin square x upon sin square of x upon cos square x, this sin square x will be cancelled and you will get cosine square x dx. तो इससे आ जाएगा हमारा cosecant square x dx माइनस इससे आ जाएगा हमारा secant square x dx, और इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cot x माइनस दिस इज टेंजेंट ऑफ x प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. एक क्वेश्चन आप और ले सकते हो एज ए होमवर्क.
आप ट्राई करें, अगर आपसे ना बन पाए तो आप बता दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cosine of 2 alpha, alpha is a constant value, okay, remember, divide by cos sine x minus cos alpha dx, ठीक है। अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, के अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन आप और भी होमवर्क कर सकते हो होमवर्क में, इंटीग्रेशन टू टेंजेंट एक्स माइनस 3 टेंजेंट एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। इजीली यू कैन जस्ट एक्सपैंड दिस आउट, this 2 10x minus 3 cot x is whole square, yes, you expand this out and आपका एक्सप्रेशन जो आएगा उसको आराम से कर लेना। इसमें जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक टेन स्क्वायर आएगा, उसका मैंने बताया था आपको, उसको आपको ब्रेक करना होगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। एक कॉट स्क्वायर आएगा, उसको ब्रेक करना होगा आपका इन कोजेक कोजेक स्क्वायर एक्स में, ओके। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन के इसमें। एक क्वेश्चन आप और लीजिए, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx. So the easy way to solve this question is what? To rationalize this question. Multiplying, let me add this expression first. Multiplying numerator and denominator by what? This conjugate 1 minus sin x dividing by 1 minus sin x. Okay, इसे आप सॉल्व करें, क्या आएगा ये आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा sin x into 1 minus sin x, in denominator a plus b into a minus b will be 1 square, that is 1, and sin squared dx. Now you can see that, okay, नीचे देखिए क्या बन रहा है, ये बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा आपका क्या, sin x into 1 is sin x minus sin x into sin x will be sin squared x divided by 1 minus sin squared x is what? It is cos square x dx. You just need to divide it out. So divide कर दीजिए, it is sin x upon cos square x minus sin square x divided by cos square x dx. Yes, इसको आप solve कर ले अब। See here, sin upon cos will become tangent of x, and 1 upon cos, there is 2 cos, yes, 1 upon cos will be secant of x. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये इसको अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन sin square upon cos square is tangent of square x dx. Now you see, ये क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ लेके आ गया। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हमने पढ़ा था, इसका हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था secant x, ओके, माइनस इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे secant square x minus 1 dx, correct? Okay, the value of this one will be, this is the secant square secant x minus integration of secant square x dx minus integration 1 dx, ये आ गया। This will be secant x minus integration of secant square x is what? It is tangent of x minus integration of 1 is what? X, sorry, this was minus, so it was minus plus minus 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 plus, so this will be plus plus and plus c a constant of integration. ये मेरा सॉल्यूशन है। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और जो बचे कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के वो करेंगे। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो डिफरेंट मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम आगे जो अच्छे क्वेश्चन बचे हैं वो बोलेंगे, ओके। टिल देन प्लीज, आप वीडियो अगर देख रहे हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें